Hello students, welcome back to my channel. So today I am going to start activity 7 from your first chapter, matter around us. So now the topic is how small are the particles of matter. So what you have to do for this, you have to do one activity. Okay, so we are doing here one activity. So take a beaker with water and add 1 or 2 crystals of potassium permanganate and dissolve them in water. So you have to take 2 crystals. Okay, crystals you have to take, not powder. Okay, you have to take crystals of potassium permanganate. How it will be, I will show you. So this is the potassium permanganate. Okay, so आपको क्या करना है, 2 crystals of potassium permanganate लेना है और उसको वाटर में डिसॉल्व करना है. Okay, so what color do you observe? So next what we have to do, 10 ml of this solution. Okay, what solution you have prepared? Okay, so with the potassium permanganate, with the 2 crystals of potassium permanganate, you have to take the 10 ml of solution. Okay, then you have to add it to 90 ml of clear water in another beaker. You have to add it in another beaker. Okay, so which contains 90 ml of clear water. So आपको क्या करना है, आपको एक और बीकर लेना है जिसमें आप आपने जो पहले सोल्यूशन तैयार किया था 2 crystals ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट से, वो सोल्यूशन आपको 10 ml लेना है और फिर उस सोल्यूशन को आपको दूसरे बीकर में डालना है जिसमें 90 ml ऑफ वाटर आपको डालना है. सो नाउ व्हाट डज हैपन टू द कलर ऑफ वाटर इन सेकेंड बीकर. तो सेकेंड बीकर में आपको कौन सा कलर मिलता है. सो अगेन टेक आउट 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन. अगेन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन. ओके, सेकेंड बीकर में जो सोल्यूशन आपने तैयार किया है, यू हैव टू टेक 10 ml ऑफ दिस सोल्यूशन एंड ऐड टू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर. फिर आपको फिर एक बीकर लेना है, फिर उसमें आपको 90 ml ऑफ क्लियर वाटर ऐड करना है, फिर ये 10 ml ऑफ सोल्यूशन यू हैव टू ऐड. So carry out this process 4 to 5 times as shown. Okay, so what you have to do, you have to carry out this process how many times, 4 to 5 times. Okay, so now observe the changes in the intensity of color of the solution. अब आपको इसके changes देखना है. So is the water in the last beaker still colored? How is it possible for 2 small crystals of potassium permanganate to color a large volume of water? How is it possible? ओके, ये कैसा पॉसिबल है कि 2 क्रिस्टल, सिर्फ 2 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के पूरे वाटर को कलर देते हैं. सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एक्टिविटी. सो रिपीट द एक्टिविटी बाय टेकिंग अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट. सो कॉपर सल्फेट कैसा होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं. सो आपको क्या करना है, कॉपर सल्फेट लेना है और ये एक्टिविटी को आपको रिपीट करना है. पहले आपने पोटेशियम परमैंगनेट से किया था. Now you have to take copper sulfate instead of potassium permanganate. So several interesting conclusions can be drawn from the above activity. So we can conclude that there must be very tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which are uniformly distributed in water to change its color. So we can conclude here, what we can conclude here, there must be very tiny particles. So they are very tiny particles in just one crystal. If you take one crystal, okay, if you take one crystal of salt, either one crystal of potassium permanganate or copper sulfate, there will be very tiny particles is present in one crystal. एक crystal में बहुत सारे tiny particles होते हैं, छोटे छोटे particles होते हैं which are uniformly distributed in water, जो पानी में distribute होते हैं और पानी का कलर चेंज करते हैं. सिमिलरली अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट टू हैज सेवरल टाइनी पार्टिकल्स विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू गिव कलर. इसी तरह कॉपर सल्फेट के भी क्रिस्टल्स होते हैं, वो क्रिस्टल्स भी टाइनी पार्टिकल्स में कन्वर्ट होते हैं और वाटर में डिसॉल्व होते हैं. ओके, एंड इट गिव्स कलर टू वाटर. So both solids and liquids including water are made up of tiny particles. Solid और liquid दोनों में भी small particles होते हैं. Okay, so how do the particles of the solid distribute in the liquid? So कैसे ये particles of the solid liquid में कैसे distribute होते हैं? Let us find with the activity 8. So हम यहाँ पर activity 8 कर रहे हैं.
there exists space between particles. So there exists space between particles. Particles space होती है. Okay. So take a graduated beaker. Now you have to take a beaker, okay, and fill it with some water. Beaker को आपको water से fill करना है and mark the water level. Okay. So add some salt and stir it thoroughly. आपको उसको mix करना है, stir करना है. Salt आपको salt add करना है, फिर stir करना है with a glass rod. Okay. So now glass rod you have to take. Okay. So observe if there is any change in water level. Add some more salt and stir it again. Okay. आपको और थोड़ा salt डालना है, फिर से stir करना है और आपको water level observe करना है. Observe the change in the level of water. Does the level of the water change here? Where did the salt go? Can you see it in the water? So from these activities 7 and 8, we can conclude that liquid particles in a liquid have some space between them. Okay. So liquid particles जो liquid में होते हैं उनमें space होती है. Okay. And the solid particles enter into the space between the liquid particles on dissolving solid in liquid. So recall the incense stick activity. Okay, you have to recall the incense stick activity which we did. Okay, अगरबत्ती से जो हमने एक्टिविटी की है आपको उसको रिकॉल करना है. ये मैंने पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है इंसेंस स्टिक की एक्टिविटी. सो डू यू एग्री दैट गैस इज ऑल्सो मेड ऑफ पार्टिकल्स एंड दे हैव लार्ज स्पेस बिटवीन देम. सो डू यू एग्री विद दिस? So particles of matter attract each other. Okay, always the particles of matter attract each other. Okay, so now we are going to do activity 9. So what is activity? Observing the force of attraction between the particles of matter. Okay, observing the force of attraction. We have to observe the force of attraction between the particles of matter. So open a water tap and allow the water to reach the ground. Okay, so open the water tap को आपको open करना है and allow the water to reach the ground. Now try to stop the stream of water with your finger. Okay, so you have to stop the water. आपको क्या करना है, आपको टैप की तरफ अपना हाथ फिंगर रखना है और आपको उस वाटर को स्टॉप करना है. जो स्ट्रीम ऑफ वाटर आता है उसको आपको स्टॉप करना है. So are you able to move your finger through the stream of water anywhere from the tap to ground? What is the reason behind the stream of water remaining together? Now try to move your finger through an iron nail as in the stream of water. Are you able to do it? If yes, does it rejoin? So from the above observation, we can say that particles of the matter have forces acting between them that keeps the particles together. So ये activity से हम लोग ये देख सकते हैं कि we can say that particles of the matter में जो particles होते हैं उसमें एक force होता है जो वो लोग को help करता है that keeps the particles together. Now we are going to learn how diffusion takes place. So we have already carried out several activities to explain diffusion of particles, solids, liquids and gases. हमने कई सारे activities किए हैं diffusion of particles, of solid के, liquid के and gas के. So diffusion can be possible only when the particles of matter move continuously. Okay, diffusion कब possible होता है? जब particles जो matter में होते हैं वो continuous होते हैं. Okay. So in the incense stick activity, the particles responsible for the scent move and enter the space between the air particles. The scent particles quickly spread and across the room. Okay. So आपने ये अगरबत्ती की एक्टिविटी में आपने देखा है कि कैसे पार्टिकल्स जल से रूम में स्प्रेड हो जाते हैं. ओके, सो पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स एंड गैसेस. So rate of diffusion of gases is higher than the liquids. So remember this is very important. So rate of diffusion of gas का जो rate होता है वो liquid से higher होता है. Okay, so while the rate of diffusion of liquid is higher than solids. Okay, so liquid का जो diffusion होता है वो solid से ज़्यादा होता है. Okay, so solid का जो diffusion है वो सबसे कम होता है. Okay, then liquid, then gas. Okay, gas का सब में fast होता है, then liquid का होता है, then solid का होता है. So there are two reasons for higher rate of diffusion of gases. So there are two reasons for it. Okay, first reason is speed of gas particles is very high. The space between gas particles is very high. Okay,
सो डिफ्यूजन ऑफ गैस हायर क्यों होता है, क्योंकि उसमें स्पीड जो होती है गैस पार्टिकल्स की वो हाई होती है और उसका स्पेस जो होता है वो भी हाई होता है. ओके. So similarly, the greater diffusion rate in liquids compared to solids is because particles in liquids move freely and have greater space between them when compared to particles of solid. So observe the following diagram. Okay, you can see here with the diagram which shows the difference in arrangement of particles in solids, liquids and gases. So you can see this in this diagram. So in a gas, the particles are not as close together as in a liquid. Okay. So if a colored gas is mixed with a colorless gas, the color spreads evenly in it. This happens faster in a gas than in a liquid because of large gaps between the particles of gas. Fewer particles of gas obstruct in the way of spreading. Okay. So you can see the diffusion of bromine when it diffuses through air. तो अगर आप डिफ्यूजन ऑफ ब्रोमाइन का देखते हैं जो एयर में डिफ्यूज़ होता है, तो ब्रोमाइन इज़ ए ब्राउनिश कलर्ड गैस. ब्रोमाइन एक गैस होती है जो ब्राउन कलर में होती है. हैंस इट्स डिफ्यूजन इज़ कलरलेस. इन कलरलेस एयर कैन बी सीन क्लियरली. ओके. सो इफ द एयर इज़ कलरलेस देन यू कैन सी द डिफ्यूजन क्लियरली. इफ़ वी अलाउ ब्रोमाइन टू डिफ्यूज इन वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स एम्प्टी स्पेस, तो अगर हम ब्रोमाइन को अलाउ करते हैं एम्प्टी स्पेस में डिफ्यूज़ होने के लिए, इट डिफ्यूजेस फास्टर इनटू वैक्यूम बिकॉज देर आर नो पार्टिकल्स टू ऑब्स्ट्रक्ट इन इट्स वे. तो उसको कोई पार्टिकल डिस्टर्ब नहीं करता है. डिस्टर्ब नहीं करने की वजह से वो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाता है. ओके. सो विद दिस वी हैव completed our first chapter. I am going to give you notes of this chapter in my next video. Okay. Till then, stay safe. Goodbye.